Hola. Hola y bienvenidos a las chicas y chicos del Instituto Terranova. Hoy es el comienzo de su proyecto La Vuelta al Mundo en 80 días. Espero lo disfruten mucho y aprendan mucho. Para comenzar toda esta nueva aventura, vamos a conocer un poco de las diferentes nacionalidades que van a encontrar y aprender durante este proyecto. Hallo, ich heiße Sonja und ich komme aus Deutschland. नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी है और मैं उत्तर भारत से आती हूँ। उत्तर भारत में हिंदी बोली जाती है, जिस भाषा में मैं बात कर रही हूँ, और भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में। करीबन 780 भाषाएं हैं और भारत यानी इंडिया में। Hola, dic Mariona i tinc 25 anys i sóc de Barcelona, la capital de Catalunya, que és una regió d'Espanya. Aquí parlem espanyol i català. Καλημέρα, το όνομά μου είναι Μανώλης Αποστολάκης, είμαι 26 χρονών, είμαι από την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στην Αθήνα που είναι η πρωτεύουσά της, ενώ η καταγωγή μου είναι από ένα νησί στα νότια της Ελλάδας, στην Κρήτη, και τώρα ζω στην Σουηδία και πιο συγκεκριμένα στην Στοκχόλμη. Hej, jag heter Benjamin, kommer från Sverige och pratar svenska. Någonting ni kanske känner till om Sverige är det att vi har Nobelpriset och såklart ABBA. Olá, sou o Carlos, sou de Braga, em Portugal. E facto giro acerca de Portugal é que somos o maior exportador de cortiça do mundo. Kaixo, nire izena Jokin da, eta 24 urte dauzkat, euskalduna naiz, zehazki bada Euskal Herria, Frantzia eta Espainia artean aurkitzen den zonalde historiko bat, eta gure kulturaren fun fact bat izango litzake, euskara dela Europar hizkuntzarik zaharrenetariko bat, zehazki jatorri ezin europearra daukan bakarrenetariko bat. Hola, soy Mar, de Madrid, de España. ¿Sabíais que, según el libro récord de los Guinness, en Madrid está el restaurante operativo más antiguo del mundo? Hola, Déu vos guard, com diria el meu avi. Em dic Miquel i jo parlo català, una llengua que es parla a Catalunya, a València, a les Illes Balears, a la Catalunya Nord i a la ciutat de l'Alguer. Allô, moi c'est QA, je viens de Montréal, Québec au Canada. Ça c'est la chouette rayée, c'est le seul hibou avec les yeux bruns au Québec et on sait pas pourquoi. Merci! Hallå, Tobias heter jag, kommer ifrån Sverige. Och en rolig fakta om Sverige, visste ni att företaget Spotify och företaget IKEA kommer härifrån? Hello, my name is Alex and I live in Philadelphia, Pennsylvania in the United States. It's really cold here this week, so I have my winter clothes on. Philadelphia is known as the city of brotherly love and is one of the oldest cities in the United States. In fact, Philadelphia was the original capital of the United States before Washington, D.C. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് പത്മനാഭൻ. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ 24 വയസ്സ്. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് അഥവാ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളമാണ് എൻ്റെ സ്വദേശം. എല്ലാവർക്കും എന്റെയും എൻ്റെ നാടിന്റെയും ശുഭദിനാശംസകൾ. നന്നായി വരട്ടെ, നന്നായിരിക്കട്ടെ.